Take out your English reader book and open next chapter of unit 5, the Green Act. Today we will solve all the exercises and question answers of this this chapter. So see here, tick the correct options, complete the given statements so you can see the answers here. Now we will do exercise C4. Complete the given statements briefly. So you can see here the children were disappointed on seeing the litter thrown on the beach. Second one is, once the sea water, Neha and Sachin forgot about the surroundings. The mother felt proud when she saw a cleaner beach. The hotel manager also joined the cleaning mission. The children planned to make a green club on the internet. Okay, now please come on this C5. Read the given extract and answer the following questions. So read it carefully, then after we'll solve the answers. C5 आंसर 1 का ए क्या है? नेहा said this to Sachin. Answer B is, the speaker called the beach filthy because some tourists and the local people had littered the place. Now we'll solve the other questions as well. A is, Neha and Sachin's father said these words. Neha and Sachin's green brigade is mentioned here. C answer is, the green brigade cleaned the beach. Neha and Sachin placed several dustbins and placards everywhere in order to clean the beach and distributed sachets to create awareness among the people. Now please come on exercise C6. We will solve all the questions of this exercise. Okay, so you can see answer 1 is, Neha and Sachin lived in a small hill station. Their plan for vacation was to visit the Nicobar Islands. Answer second, they were disappointed at the sight of the beach because it was a filthy place. They saw many cans, plastic bottles and eatables thrown over there. Now the third answer is, yes, Neha and Sachin enjoyed in the sea water. Once they entered the water, they soon forget about the surroundings. They had great fun riding on the waves, collecting shells and throwing water at each other. Now last answer is, Neha and Sachin started the cleanliness and awareness mission on the beach. This made their पेरेंट्स प्राउड. इसके बाद C7 एंड C8 लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है. अंडरस्टैंड. नाउ वी विल सॉल्व C9 एक्सरसाइज. अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. ओके, सो यू हैव टू राइट ओवर हियर. व्हेन द चिल्ड्रन सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर मिशन. जब कोई भी बच्चा अपना मिशन कंप्लीट कर लेता है तो वो ओवरजॉय हो जाते हैं, राइट? ओवरजॉयड. व्हेन दे सॉ अ लिटर्ड बीच, डिसअपॉइंटेड. व्हेन द चिल्ड्रंस पेरेंट्स सॉ द डिफरेंस दे हैड बॉट अबाउट द बीच, प्राउड. व्हेन द टूरिस्ट वर प्रेजेंटेड विद sachets to wear over their shoulders, embarrassed. When Sachin told Neha about his plan, excited. Okay, now we will solve this exercise C10. Pick out at least 3 words from the bin that convey the same meaning as the given box. Write these words against the box. So you have a bin. Okay, here are many words. You have to pick it out and write the correct places. Okay, so you can see here. अब देखिए, ट्रैश में क्या होगा? गार्बेज, वेस्ट एंड लिटर. फिल्थी में क्या होगा? डर्टी, अनक्लीन एंड ग्रीमी. रिक्वेस्टेड में बेग्ड, अपील्ड एंड प्लीडेड. मिशन में क्या होगा? असाइनमेंट, टास्क एंड प्रोजेक्ट. सजेस्टेड में क्या होगा? रिकमेंडेड, प्रपोज्ड एंड एडवाइज्ड. ओके,
Now we will solve this exercise C13. You have just read a story of two children who are concerned about nature. आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी जो कि दो बच्चों की जो कि नेचर के बारे में कंसर्न है. देयर आर मैनी मोर वेज टू सजेशंस विच कैन हेल्प अस बिकम ग्रीन हीरोज एंड प्रोटेक्ट नेचर. अब हमारे पास क्या है कि कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके लिए हम हीरो बन सकते हैं, है ना. वो क्या है देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं. विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज. ओके, देयर इज़ एन एरर इन ईच सेंटेंस बिलो. आपको ये सेंटेंसेस दिए गए, इसमें कुछ ना कुछ एरर है और ये उनके एरर्स को आपको क्या करना है, सही करना है. देखिए, स्विच ऑन द टीवी, कंप्यूटर, फैंस, लाइट्स etc व्हेन यू लीव द रूम. नो, यू हैव टू स्विच ऑफ. ओके, इंडोर गेम्स विल हेल्प सेविंग इलेक्ट्रिसिटी एट होम. इंडोर गेम्स तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को सेव नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आउटडोर. फॉलो 3 rupees ऑफ रिड्यूस, reuse and rewrite. No, so 3 rules of reduce, reuse and rewrite. Now throw away paper plates are good for environment. No, it's bad. Now next, public transport and car pools are good for short distance. No, these are good for longer distance. Carry a paper bag for shopping. No, we have to carry a cloth bag for shopping. Okay, adopt a dog in the neighborhood. No, adopt a tree in the neighborhood. Okay, so all the exercises are solved. You can read this chapter, love for trees. Then after you can read be a green hero. इसकी भी एक्सरसाइज प्रीवियसली आपको सॉल्व करा दी गई है ना. आप देख सकते हैं और इसको रीड कर लीजिएगा. थैंक यू, बाय बाय.